It is my ice cream that you are enjoying. What I need right now to have a cup of coffee. It is the exact color I was looking for. ये कुछ वो सेंटेंसेस हैं जो अक्सर हम स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किया करते हैं, पर इसकी फॉर्मेशन के बारे में, इसकी एग्जैक्ट फॉर्मेशन के बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस की जो ना केवल हमारी इनफॉर्मल इंग्लिश में काम आते हैं बल्कि फॉर्मल इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो आज के ग्रामर सेशन में हम बात करने जा रहे हैं डिटेल में कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस के बारे में जिन्हें जाना जाता है क्लेफ्ट सेंटेंसेस के नाम से। हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास बर्ड्स ऑफ विजडम। First, let us understand what is the meaning of the word cleft. The meaning of cleft is to divide, बांटना। Before proceeding ahead, let's have an idea of cleft sentences. It is my watch that has been broken. Would they like in breakfast to have bread and butter? That was Ankita who arrived first. All I need to do right now to have a cup of coffee. So as it is clear with the word cleft, the meaning of which is to divide, the definition also goes like this. A sentence parted in two different clauses connecting the old information with the new one, emphasizing or focusing the new information is called cleft sentence. एक वाक्य जो दो भागों में बटा हो तथा पुरानी सूचना को नई सूचना से जोड़ता हो और नई सूचना को मुख्य रूप से केंद्रित करता हो या जोर देता हो, क्लेफ्ट वाक्य कहलाता है। फीचर्स ऑफ क्लेफ्ट सेंटेंस। एक क्लेफ्ट सेंटेंस की ख़ास बातें होती हैं कि क्लेफ्ट सेंटेंस अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसके दो भाग होते हैं और हर पार्ट की अपनी एक वर्ब होती है। ये पुरानी इंफॉर्मेशन को नई इंफॉर्मेशन से जोड़ते हैं और इसका मुख्य काम होता है नई इंफॉर्मेशन को केंद्र में लाना। Example: Nisha was absent yesterday. No, it was Disha who was absent yesterday. तो इस सेंटेंस में हमारी जो न्यू इंफॉर्मेशन है वह यह है कि इट वॉज दिशा, यानी कि ये दिशा थी जो एब्सेंट थी, जबकि हमारी जो ओल्ड इंफॉर्मेशन है वह यह है कि समवन वॉज एब्सेंट यस्टरडे, यानी कि कोई कल एब्सेंट था, लेकिन एग्जैक्टली
ये नहीं पता कि कौन एब्सेंट था। उसके नेम में कंफ्यूजन था, जो कि करेक्ट किया गया न्यू इंफॉर्मेशन के द्वारा। तो वो जो कौन एब्सेंट था, जब उसका नाम बोला गया तो वह हमारी न्यू इंफॉर्मेशन हुई, जिस पर फोकस किया गया या एम्फेसाइज करके बताया गया। Kinds of cleft sentences. There are two kinds of cleft sentences, It-clefts and WH-clefts. It-cleft. In it-cleft, the focus is given on the first clause or primary clause only. तो हम कह सकते हैं कि इट क्लेफ्ट में जो हमारे सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट होता है, जहाँ पर इट यूज होता है, उस सेंटेंस पर ज्यादा जोर दिया जाता है, ताकि जो लिसनर है वो उस फर्स्ट पार्ट की नई इंफॉर्मेशन पर ध्यान दे। The structure of it-cleft sentence. First of all, we will put it, then be form of the verb, then subject or object, and then that or who clause. जो हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है वही हमारा एग्जैक्टली एम्फेसाइज्ड वर्ड या एम्फेसाइज्ड फ्रेज होता है। वो वर्ड होता है या वो फ्रेज होता है जिसे जोर देकर बोलना होता है, ताकि लिसनर का ध्यान उस तरफ जा सके। एग्जाम्पल, Nishant has secured highest percentage. No, it's Samarth who has secured highest percentage. So because we have to give stress to the main noun who is the real achiever, we added him in the first clause, that is it clause. Silky read Sonam's diary. No, it was Ananya's diary that was read by Silky. कभी कभी हम it के स्थान पर अदर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, Those are the trees that have been cut down by some strangers yesterday. That was the ice cream flavor I wanted to taste. These are the notes I was searching for. Next one, WH-cleft, also called pseudo-cleft. In WH-cleft, the focus is given on the second part or secondary clause. Example, what can I do for you? What you can do for me is to help me in completing my project. Structure of WH-cleft sentence. WH clause plus be plus emphasized word or phrase.
Example, what do you need right now? What I need is just to have an ice cream right now. Sometimes we can replace WH with all, the first thing, and the one thing, etc. Example, the first thing I noticed in the morning was a beautiful lily blooming in my garden. The one thing I want right now to be alone. All you need is to have rest for some time. We can use WH-cleft clause in reverse order also. Example, a new mobile is what I really need now. Venice is the place where I wish to visit once in my lifetime. We can use modal auxiliary verbs also in cleft sentences. Example, it may be my fault that the rose plant in my garden died so soon. What I need now might be some snacks. These are some rules of cleft sentences. वीडियो आपको सूटेबल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और यदि आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।